Hello everyone, welcome to Aspire Academy. Today we are going to deal with animal kingdom. Okay, so phylum Chordata. Already invertebrate, all the phylums we have covered up. So this is our 12th lecture on this topic, phylum Chordata. Okay, so let's proceed. What do we mean by chordates? Okay, and how we can know that this organism is chordate or non-chordate? Okay, how can we differentiate between the organism? So, what is chordata? So, animals belonging to this chordata are fundamentally, what is the main fundamental thing about the chordates? That they have a characteristics which is just you can see by, you can observe it by the presence of notochord, whether the notochord is present or not. Okay, and there is another thing, the hollow nerve cord, dorsal hollow nerve cord, the most important things on the basis of which we can categorize the organism as chordate. The most important is notochord. Notochord present hai, then that is the chordate. Okay, then another thing, dorsal hollow. Dorsal hoga lekin hollow. Okay, so that is nerve cord. Nerve cord will be hollow. And the another most thing is they will have paired pharyngeal gill. Okay, so gill slits will be there. It will be in paired form. Okay, the another things, ये सब तो main थे, ठीक है, on the three main characteristics on the basis of which we can categorize the organism as chordates. Okay, the another thing, the chordates are mostly bilaterally symmetrical. That means if we try to divide the body of the chordates, so equally we can divide it. ठीक है, एक half से आप cut कर सकते हो, so you will get to see that both the side is equal. So bilateral symmetry होता है. Okay, triploblastic होते हैं because they are made up of 3 germinal layer. And the another thing is coelomate. Coelom present होगा किनमें? Chordates में. Okay, with organ system level of organization. That means full well developed organ system will be present. Respiratory, circulatory, excretory, सारा system well developed present होगा chordates में. Okay. They possess a post-anal tail. That means after anus. Anus के just बाद there will be a tail. So that means we can name it as post-anal tail. And there will be closed circulatory system. Circulatory system closed है. That means the blood will flow within the blood vessels. ठीक है? Blood vessels में ही blood flow करता है chordates में. But in several invertebrates, we have also seen that they are having open circulatory system. बट कॉर्डेट्स में आप क्या देखोगे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पोस्ट एनल टेल, ये सारे चीजों कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे आप यू कैन से दैट द कॉर्डेट्स आर हैविंग दीज कैरेक्टर. ओके, बट उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये 3, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड हॉलो, डॉर्सल एंड पेयर्ड pharyngeal gill slit. Okay, next, what is the basic difference? How we can जस्ट रैंडमली आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट में? सो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है. कॉर्डेट्स में क्या होता है? नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट. ओके, एट सम स्टेज इन द लाइफ, अगर पूरे लाइफ स्पैन में प्रेजेंट ना हो, बट आइदर ड्यूरिंग द यंग स्टेज, ठीक है, या तो एडल्ट स्टेज में या तो लार्वल स्टेज में, कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा दिस नोटोकॉर्ड. ओके, एंड अनदर थिंग, pharynx perforated by, जितना pharyngeal region है that will be perforated means उसमें pores होंगे, ठीक है, and there will be the gill slits. Another thing, central nervous system होगा, ठीक है, central nervous system CNS से भी आप डिनोट कर सकते हो, will be dorsal and hollow and single. Dorsal, hollow and single central nervous system, ठीक है. And then post anal tail will be present. Heart जो होगा, ठीक है, हार्ट विल बी वेंट्रल. किनका? कॉर्डेट्स का. हार्ट वेंट्रल साइड होता है, लाइक वी आर ऑल्सो कॉर्डेट, ठीक है. तो हमारा बैक रीजन जो है वो डोर्सल है, द फ्रंट वन इज वेंट्रल. वी आर हैविंग आवर हार्ट इन द वेंट्रल रीजन. ओके, सो जितने भी कॉर्डेट्स हो गए, सो वी कैन सी दीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. नॉन कॉर्डेट्स, इफ यू विल जस्ट डिफरेंशिएट, यू विल सी नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ठीक है, नोटोकॉर्ड नहीं होगा, एब्सेंट होगा किन में? नॉन कॉर्डेट में. दैट इज वाई, इसी नोटोकॉर्ड के एब्सेंस के वजह से ही तो नाम है नॉन कॉर्डेट्स. देयर इज नो नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है. नेक्स्ट, गिल स्लिट होगा या नहीं? गिल स्लिट्स एब्सेंट.
इनवर्टिब्रेट्स में ऑल्सो वी हैव सीन, एंड नॉन कॉर्डेट्स जितने होंगे उनमें गिल स्लिट नहीं प्रेजेंट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा, जो कि कॉर्डेट्स में डॉर्सल है, ठीक है। कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, बट इन द नॉन कॉर्डेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, एंड इट वाज हॉलो। कॉर्डेट्स में हॉलो था, नॉन कॉर्डेट्स में सॉलिड है, ओके। एंड कॉर्डेट्स में सिंगल हॉलो डॉर्सल central nervous system, but here it will be double ventral solid, just opposite एकदम। then post anal tail ये भी absent होगा non chordates में। heart कहाँ होगा? dorsal होगा if present, if heart is present then it will be dorsal, not ventral as the chordates, okay। so ये basic differences था chordates and non chordates में। now the chordate shows advancement over non chordate। नॉन कॉर्डेट्स के बाद आते हैं कॉर्डेट्स। अगर क्लासिफिकेशन आप देखो एनिमल किंगडम का, सो कॉर्डेट शोज मच मोर एडवांसमेंट देन नॉन कॉर्डेट्स, ओके। सो हाउ वी कैन से, ओके, नाउ हियर यू सी लिविंग endoskeleton, the skeletal system is present in the chordates which grows with the body, okay। so more efficient respiratory organs are also present in chordates, gills and the lungs are present। फिशेस में आप देख लो, एम्फीबियंस में देख लो, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ओके। सो वी आर इन फिशेस, स्पाइसेस में हमने देखा गिल्स होता है, ओके। देन लंग्स एंड ऑल वी कैन सी मैमल्स में है, एव्स में है, ओके। विथ एनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिकॉज इनवर्टिब्रेट्स के कंपेयर में, नॉन कॉर्डेट्स के कंपेयर में कॉर्डेट्स आर मच मोर एक्टिव, ओके। So we have to perform our life activities, हमारा organ level of organization होता है। So for all the organ system to work properly, we need much more energy. Okay. So we are having gills and lungs. Some of the organism of the chordates have gills and few other have lungs. So these things help proper respiration में help करता है, ठीक है। और simply we can say we are having much more efficient respiratory organs. Okay, and more efficient circulation of the blood is maintained by a well-developed heart. Heart is a pumping organ, very well we know, ठीक है। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, पंप करेगा ब्लड को, बट थ्रू व्हाट? किसके थ्रू ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है? आइदर एव्स में देखो, रेप्टाइल्स में देखो, सो दे आर ऑल हैविंग द ब्लड वेसल्स, ओके। सो वी आर हैविंग वेल डेवलप्ड हार्ट, हैविंग अ स्पेशल कार्डियक मसल्स। वी नो our heart is made up of cardiac tissues, cardiac muscles का बना है, which is very active, it does not get tired। तो हमारा heart भी है, ठीक है, it is much more specialized and it is made up of cardiac tissue which will never get tired, or when it get tired finally it is the end, okay। so we can say yes, chordates are much more advanced than non-chordates। now another thing, another point about the advancement, how we can say there is tubular central nervous system। chordates में कैसा central nervous system होता है? hollow होता है, dorsal होता है, single होता है। so tubular, that means tube like हमारा nervous system होता है, ठीक है, which provide more space for the nerve cells, so essential for well integrated behavior। that means we know all the activities that we are performing, the messages which are conveyed from the sense organs to brain, okay, then again from the central nervous system to the sense organs। so जितने भी motor nerves, sensory nerves काम करते हैं, so that is all the part of that nervous system, ठीक है। so all that belongs to that central nervous system, CNS, okay। far better sense organs we are having, okay। so proper sense organs हमारे पास है, well developed endocrine gland for the release of the hormones which are the chemical messengers, ठीक है। तो chemicals, hormones are the chemical substance, okay। growth हो गया, ठीक है, for the growth and all the function, the endocrine glands are playing a great important role for efficient chemical coordination। so all these features are present in chordates, not in non-chordates, okay। now the phylum Chordata, we can divide them into 3 subphyla। ऑलरेडी द कॉर्डेट्स दैट इज द फाइलम है वो, ठीक है। कॉर्डेट क्या है? फाइलम है, उसको और सब फाइलम में आप डिवाइड कर सकते हो। देयर इज अ 3 ब्रॉड सब फाइलम
that is Urochordata, Cephalochordata, ठीक है, and Vertebrata. In Urochordata we have seen, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा कहाँ पे, टेल रीजन पे, सेफेलोकॉर्डेटा हेड रीजन पे, एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है, लास्ट वन द सबफाइलम. तो यूरोकॉर्डेटा इज आल्सो नोन एज ट्यूनिकेटा, ठीक है. सेफेलोकॉर्डेटा का क्या और दूसरा नाम है, लैंसलेट्स. एंड वर्टिब्रेटा दैट मींस वी आर क्रेनिएटा. हम लोग वर्टिब्रेट्स है, क्रेनिएटा वी हैव द ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम है हमारे पास. Okay, so we can classify, you can see the classification table also. The Chordata phylum Chordata has been divided into 3 subphyla. ये 3 क्या है, subphyla, Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. ठीक है, अब आप यूरो एंड सेफेलो को छोड़ के just come to Vertebrata because we are going to classify the Vertebrata broadly. Okay, so there is the division. फाइलम के बाद क्या आता है, सब फाइलम. सब फाइलम के बाद आप देख रहे हो डिविजन, देयर इज डिविजन. सो द सब फाइलम वर्टिब्रेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब फाइलम. सब यू कैन से वर्टिब्रेटा को डिविजन में आप बांट सकते हो. ओके, एग्नाथा दैट मींस दे आर हैविंग, दे आर नॉट हैविंग जॉज. जॉ जिनका नहीं है दे आर एग्नाथा, ठीक है, जॉ लेस. ओके, एंड जितने भी जॉ organism hai which are having jaw, they are known as Gnathostomata. Okay, so simply what we have done, vertebrata को हमने divide किसमें किया, एग्नाथा, ठीक है, एग्नाथा एंड नाथो, ठीक है, नाथोस्टोमाटा में. ठीक है, एग्नाथा क्या था, ठीक है, what are the organism which are known as agnatha, that they lack jaw. We cannot find any jaws in them. ठीक है, एंड जितने भी नाथोस्टोमाटा ऑर्गेनिज्म है दे आर हैविंग jaws. Jaws are present. Okay, then finally ये दोनों क्या था, एग्नाथा एंड नाथोस्टोमाटा इज द डिविजन ऑफ दिस subphylum Vertebrata. More if we proceed, then we can see that Gnathostomata, we can again see there is a super class. ठीक है, super class हमारे पास है. What are the super class? 2 super class, that is Pisces and Tetrapoda. ठीक है, इसके बाद आप देखोगे Pisces and Tetrapoda. That means Pisces में तो आ गया fishes and Tetrapoda that means 4 legs, 4 feet या 4 limbs total. आप 4 limb and hind limb को count करके together we are having 4. ठीक है, 4 limbs. So Pisces में भी fishes जो है, Pisces can also be categorized as the 2 classes. Fishes जो कि आप देख रहे हो, it is super class. ठीक है, Pisces and Tetrapoda क्या है, super class है. इसके अंदर कौन से क्लास आते हैं, Pisces को आप कैटेगराइज कर सकते हो एज Chondrichthyes, Osteichthyes. Chondrichthyes क्या है, जितने भी कार्टिलेजिनस फिशेस है लाइक स्कॉलिडन. ओके, एंड जितने भी बोनी फिश है दे बिलोंग्स टू Osteichthyes. ठीक है, सो इसके लिए Chondrichthyes वर्ड यूज होता है. Chondrichthyes, इक्थस जो वर्ड है वो फिशेस के लिए होता है यूज. ओके, एज इक्थायोलॉजी which is the study of the fishes. ठीक है, Chondrichthyes that means they are cartilaginous, कार्टिलेज का बना है. ठीक है, जिनके अंदर बोन्स नहीं होते बट दे आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, स्कॉलिडन के जैसा. ठीक है, सो दे आर Chondrichthyes. ठीक है, आई हैव नॉट रिटन द फुल नेम ओवर हियर. एंड देयर इज Osteichthyes. ठीक है, Osteichthyes they belongs to what, they are the bony fishes. Osteichthyes क्या है, bony fishes है. ओके, अब टेट्रापोडा में आ जाओ. टेट्रापोडा का अगर क्लासेस देखोगे सो देयर इज Amphibia, Reptilia, Aves and mammals. Okay, you can see over here also Amphibia. ठीक है, Amphibia से और इवॉल्व होके क्या बना, Reptilia. Much evolution has taken place, then Aves and then Mammalia. Okay, so this is the classification of the phylum Chordata. Now we have seen the first 2. Firstly, we have seen the phylum Chordata was divided into 3 subphylum. ठीक है,
यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में देयर इज सम सर्टेन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। द फर्स्ट टू सबफाइला दैट इज यूरो एंड सेफेलो, ठीक है, दे आर द स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। है ये कॉर्डेट्स बट दे आर वेरी मच प्रिमिटिव वन, द ओल्ड स्टाइल वाले कॉर्डेट्स है, ठीक है। दैट मीन्स ट्रू कॉर्डेट अगर आप बोलो देन दे आर वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट जितने हैं दे आर द ट्रू कॉर्डेट। अपार्ट फ्रॉम दैट द टू यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, they are the small groups of organism and they are the most primitive chordate, okay, without a vertebral column. तो vertebrata and यूरोएनसेफेलोकॉर्डेटा में फर्क क्या है? That is all because of the vertebral column. The difference is of vertebral column. जिसमें vertebral column present है वो vertebrata है, जिसमें नहीं present है so they are belonging to chordates, but they are either euro or cephalochordata. Commonly यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स को कॉमनली आप क्या बोल सकते हो? लोअर कॉर्डेट्स, ओके, और सिंपली इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। ठीक है, कॉर्डेट्स है पर कैसे कॉर्डेट है? इनवर्टिब्रेट वाला कॉर्डेट, ओके, सो दे आर इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट। देन सबफाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर टुगेदर रेफर्स टू एज प्रोटोकॉर्डेट। स्पेशल नाम दिया गया है यूरो एंड सेफेलोकॉर्डेट को, दैट दे आर प्रोटोकॉर्डेट्स, okay, means chordate का just primitive form है. Then the vertebrates, okay, which is highly evolved, are commonly termed as higher chordate or euchordate. U word का मतलब क्या होता है? ठीक है, EU means true, the true chordate, ठीक है, the true chordates. So who are true chordates? Vertebrates. रेस्ट ऑल यूरो एंड सेफेलोकॉर्डेट क्या है? दे आर प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ट्रू कॉर्डेट कौन है? वर्टिब्रेट्स। आई होप द क्लासिफिकेशन, ठीक है, आउटलाइन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, इट इज क्लियर टू यू। नाउ विल कम डायरेक्टली टू द सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, विल सेपरेटली डील विथ ऑल द सब फाइलम। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या स्पेशलिटी है? How are they different from the other chordates? So Urochordates, they are mostly marine, ठीक है, marine form है, sessile है, filter feeding invertebrate. तो simply we can call it, पूरी तरह से ये chordate तो है नहीं, so simply we can call it invertebrate chordate या simply protochordates, and they are filter feeding, mostly sessile, marine, ठीक है। Some are planktonic, ठीक है, प्लैंकटन पे फीड करते हैं, एंड फ्यू आर कॉलोनियल, कॉलोनीज के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो यूरोकॉर्डेटा हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स? नोटोकॉर्ड, सिंस दे आर बिलोंगिंग टू कॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, मे बी इन द एनी स्टेज ऑफ लाइफ, सो नोटोकॉर्ड अकर ओनली इन द टेल, ठीक है। तो यूरो का मतलब ही होता है टेल, तो इसके क्या है? कॉर्डेट जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, दे आर ओनली प्रेजेंट इन द टेल रीजन, बट वेयर? ओनली इन द लार्वल फॉर्म एंड डिसअपियर इन द एडल्ट। लार्वा, जितने भी यूरोकॉर्डेट है उनके लार्वा में प्रेजेंट होगा द नोटोकॉर्ड, बट इन द टेल रीजन, एंड आफ्टर दैट व्हेन दैट लार्वा, ठीक है, दे बिकम एडल्ट, दैट टेल विल डिसअपियर, ठीक है। नेक्स्ट, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स गिव द सबफाइलम इट्स नेम. So, because of the presence of notochord in the tail region, in the larval form, it has been derived the name Urochordates. ठीक है, यूरो का मतलब tail and chordate that means string. The nerve cord is present. Nerve cord present है कहाँ? In larva, but it is replaced by single dorsal ganglia in the adult. वही nerve cord बाद में ganglion में change हो जाता है, single ganglia में develop होता है, okay? So this is the diagram. ओके, बैलेनोग्लासिस जो कि यूरोकॉर्डेट से बिलोंग करता है, ये एंटीरियर रीजन है, ब्रैंकियल अपर्चर, ओके, दिस इज एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज डॉर्सल, ठीक है, डॉर्सल वेंट्रल, दैट मींस ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, एंटीरियर, एंड दिस इज द बैक साइड इज पोस्टीरियर, ओके। देयर इज सर्टेन फॉरेन पार्टिकल्स आर देयर, फूट है, ये बैलेनोग्लासिस का फूट रीजन है। द होल बॉडी पार्ट, ये जो मेन बॉडी पार्ट है, दैट इज नोन एज टेस्ट, TEST टेस्ट, ठीक है। तो बॉडी प्रॉपर, दिस इज अ प्रॉपर बॉडी, ओके,
ये सब वेंट्रल रीजन है. एंड arterial chiffon, this part is arterial region. Okay, this is arterial aperture. ये branchial aperture है और ये arterial aperture है. Okay. Now the pharyngeal gill slits. Already we have seen in the differences chordate और जब non chordates का हमने difference देखा था, तो pharyngeal gill slits are present in chordate, but where? ठीक है, we'll see that about the pharyngeal gill slits. तो pharyngeal gill slits are numerous. ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में जो pharyngeal gill slits होता है, it is very large in number, as you can see. Okay, this part is, ये पूरा pharynx part है. So there is gill slits present in the pharyngeal region, and the whole body that is known as tunic. ये पूरे body को क्या बोलते हैं? Tunic region. This is atrium over here. There is anal pore. ठीक है, intestine region है, esophagus है, stomach है. Okay. Now, so we can see the numerous pores are there, or numerous gill slits are there, and they persist in the adult. Adult जितने भी होते हैं यूरोकॉर्डेट्स, उनमें gill slits होता है, and open into that gill slit will open into an ectoderm lined cavity known as atrium. तो ये सारे pharyngeal gill slits जो है, pharyngeal gill slits, okay, so this pharyngeal gill slit will open where? In the atrium region. ये सारे आप देख रहे हो gill slits, they are opening at the atrium. ये part atrium का है, so there the opening is there together. ठीक है, and there are no gills. Gill slit है, pharyngeal gill slit, but there is no gills. Okay, the tail may or may not persist throughout the life. Yes, tail maybe in any stage it will be visible, and in the next adult stage में वो ना हो. Okay, body is generally enclosed in a leathery test. जो बॉडी होता है यूरोकॉर्डेट का, एक लेदरी कवर के अंदर रहता है. ठीक है, दैट इज नोन एज टेस्ट और ट्यूनिक. ओके, एंड दैट ट्यूनिक इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूनिसिन. ठीक है, व्हिच इज वन ऑफ द प्लांट सेल्यूलोज, अलाइड टू प्लांट सेल्यूलोज. ठीक है, जस्ट सिमिलर टू द प्लांट सेल्यूलोज, दैट इज ट्यूनिसिन, व्हिच इज जिससे ट्यूनिक बनता है पूरे इस यूरोकॉर्डेट्स का. Now the name tunicata refers to this covering, क्योंकि ये ट्यूनिक से कवर होता है. ठीक है, so the name is given tunicata. Now more chordate like larva, ठीक है, more chordate like larva called tadpole changes into a degenerate adult. That means here we can say जो chordate like larva है, ठीक है, that is tadpole larva we know very well. तो एक टैडपोल लार्वा को अगर देखोगे तो कॉर्डेट लाइक लार्वा है. ठीक है, सो चेंजेस इनटू अ डीजेनरेट एडल्ट, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो डीजेनरेटिव फॉर्म में चेंज हो जाना, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस व्हिच इज सीन इन यूरोकॉर्डेट्स. ओके, सो अब देखोगे कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है. मेटामॉर्फोसिस मींस ऑल्टरेशन इन द बॉडी फॉर्म. नाउ most zoologists holds, or according to the most of the zoologists, we have seen that vertebrates have evolved from a creature. ठीक है, so zoologists का क्या कहना है कि vertebrates कहाँ से evolve हो गए हैं? From a creature resembling urochordate. That means scientists का कहना है कि we are vertebrates, और हमारा origin कहाँ से हुआ है? From the creature that looks much similar to the urochordates larva, which failed to metamorphosis, जिसमें metamorphosis नहीं हो पाया, but become sexually mature while still a larva. Okay, so इस यूरोकॉर्डेट्स में अगर आप एग्जाम्पल देखो, what are the organism that belongs to this, that is हर्डमैनिया, जिसको आप सी स्क्वर्ट के नाम से भी जानते हो, कॉमन नेम है. ठीक है, डोलियम which is very सॉलिटरी फ्री स्विमिंग है और बैरल लाइक होता है. ठीक है, पायरोसोमा कॉलोनियल फॉस्फोरेसेंट फॉर्म है, वो भी यूरोकॉर्डेट्स में आता है. नाउ एसिडिया एंड सैल्पा एग्जाम्पल्स है ये सब यूरोकॉर्डेट्स का. ओके, so here also you can see one of the organism. So this is one of the organism that belongs to यूरोकॉर्डेट. नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ठीक है, एंड नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर आप देखोगे there is dorsal hollow nerve cord. The tail region is there,
इंटेस्टाइन, स्टमक, एट्रियम. फारेंजियल गिल स्लिट कहाँ ओपन हो रहा है? एट्रियम में ओपन हो रहा है. देयर इज अ माउथ रीजन ऑल्सो. ओके, सो दिस इज अबाउट यूरोकॉर्डेट्स. नाउ विल कम टू सेफेलोकॉर्डेट्स. ओके, मतलब नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होगा बट वेयर? इन द हेड रीजन, सेफेलिक रीजन पे. ओके, सो सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा. ओके, सो मोस्टली जैसे यूरोकॉर्डेट्स मेराइन थे, फिल्टर फीडिंग थे. ओके, सो दे आर ऑल्सो मेराइन, फिल्टर फीडिंग. इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट है, अगेन दे आर ऑल्सो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर व्हाट? द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड टू द टिप ऑफ द स्नाउट. जो नोज वाला पार्ट है, स्नाउट रीजन है. ठीक है, सो नोटोकॉर्ड है, दे विल रीच द स्नाउट रीजन and persist throughout the life. Notochord कहाँ होगा? Throughout the life. Okay, and hence the name is given cephalos, that means head, and chordata, that is string. ठीक है, head region पे till the snout. Okay, firstly we will come, the head region is over there. ठीक है, ये वाला cephalic region है. Firstly you can see here pharynx. ठीक है, pharynx है, जहाँ पे pharynx है, there are, we can see perforation. यहाँ पे perforated gill slits है. गिल स्लिट है, फायरेंजियल गिल स्लिट्स है, और उसी फायरिंग्स के पास ही है. ठीक है, एंड देयर इज हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन. ठीक है, फायरिंग्स रीजन में आप देख सकते हो, इट इज इन द कंटिन्यूटी. देयर इज स्टमक एंड देन दिस पार्ट इज इंटेस्टाइन एंड द लास्ट, द एंड ऑफ द गट रीजन, दैट इज द एनस. ठीक है, एंड एनस के बाद है टेल, सो पोस्ट एनल टेल इज देयर. ठीक है, एनस के जस्ट बाद है. ओके, सो पोस्ट एनल टेल. And there are segments are also there. Muscular segments is visible. Now the brain region is also there. ठीक है, पहले आप देख सकते हो the lower one is notochord. Notochord के ऊपर क्या है? Dorsal hollow nerve cord. इसके ऊपर है dorsal hollow nerve cord. And here the brain part is there. ठीक है, so mostly all the character of vertebrates के जो character होते हैं, much more because after cephalochordata ही evolution हुआ vertebrate का. ठीक है, so nerve cord persists throughout the life. dorsal hollow nerve cord पूरे life तक रहेगा, throughout the life, but no brain is formed. proper brain नहीं बनेगा. ठीक है, वहां पे brain labeling देख रहे हो, the proper brain is not formed. pharyngeal gill slits are numerous and it persists in the adult. gill slit adult form में भी होगा. ठीक है, and you can even see there is numerous gill slits visible. The tail persists throughout the life, and branchiostoma, that is amphioxus, जिसका common नाम है lancelet, ये example है. So this is this phylum, subphylum cephalochordates से belong करता है. branchiostomata, जिसका और एक नाम है amphioxus, या आप बोलो lancelot. Now we have came to the subphylum Vertebrata, which is also known as craniata. Okay, craniata. That means there is a brain box. So we'll see how Vertebrata has been classified. Finally, we have came to the vertebrates phylum. Okay, subphylum Vertebrata. Now we have already seen subphylum, that is Vertebrata, will be divided into superclass, that is Pisces and Tetrapoda. Pisces में आता है हमारा Osteichthyes, Chondrichthyes. ठीक है, बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश. और आप टेट्रापोडा में आपको क्या पढ़ना होगा? देयर इज, वी आर हैविंग एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमेलिया. सो द सबफाइलम वर्टिब्रेटा रिप्रेजेंट एडवांस कॉर्डेट. हायर कॉर्डेट्स भी आप बोल सकते हो, जैसे यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, दे आर प्रोटोकॉर्डेट्स एंड प्रिमिटिव कॉर्डेट. ओके, सो दे आर इवन वी कैन से, ठीक है, दे आर लोअर वर्टिब्रेटा or invertebrate chordata. Okay, so here subphylum Vertebrata represent advanced chordate. Notochord is present where? Only in the embryonic stage. ठीक है, जैसे हमने देखा कि नोटोकॉर्ड, सेफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा में टेल रीजन में प्रेजेंट था. ठीक है, सेफेलोकॉर्डेटा में सेफेलिक रीजन, हेड रीजन, एंड इन द वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होना ही है, but where? It only in the embryonic stage. ठीक है, okay, so here in this diagram you can see this is the notochord. ठीक है, ये पार्ट आप देख रहे हो notochord है. Postanal tail is there. Okay, pharyngeal pouches and hollow dorsal nerve cord.
ठीक है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है हमारा, हॉलो डॉर्सल सिंगल नर्व कॉर्ड। ओके, इन एडल्ट इट इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, और एडल्ट में अगर आप देखोगे तो यही नोटोकॉर्ड क्या बन जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, एज वी नो वर्टिब्रेट है हमारा, वर्टिब्री जो बोन है, ठीक है, वर्टिब्रल बोन, उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सो वर्टिब्रल कॉलम इज देयर कंसिस्टिंग ऑफ रिंग लाइक बोन दैट इज नोन एज वर्टिब्री। वर्टिब्री इज द बोन, 33 बोन है ह्यूमन मैमल्स के पास, ठीक है। इन एडल्ट इट इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, यही नोटोकॉर्ड किस में बदल जाता है, सो नोटोकॉर्ड will be changed to what, we can say vertebral column, किस में बदल जाएगा, vertebral column में, okay, and consisting of a ring like bone, vertebral column, if you have just studied about that, so vertebral column हमारा कैसा, ring like bone है, that is known as vertebrae. The anterior part of the notochord is however replaced by skull, जो हमारा anterior part है notochord का, ये skull बनाएगा, ठीक है, the brain box, ठीक है। So it is replaced by skull or cranium to protect the brain and hence name craniata, क्योंकि हमारा जो नोटोकॉर्ड है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एडल्ट में वो डिसअपियर हो जाएगा, बट डिसअपियर नॉट, वी कैन से इट विल बी कन्वर्टेड, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड फर्स्टली क्या होगा, जो ब्रेन वाला पार्ट में है, ठीक है, एडल्ट दिस नोटोकॉर्ड विल बी चेंज टू वर्टिब्रल कॉलम, और जो इसी नोटोकॉर्ड का जो टिप वाला रीजन है दैट विल बी कन्वर्टेड टू स्कल और क्रेनियम, द ब्रेन बॉक्स, जिसमें हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है, ओके। Now, pharyngeal gill slit persist only in adult of lower forms. ठीक है, pharyngeal gill slit होगा पर higher, जैसे we human birds, ठीक है, we are the higher chordates है, ठीक है, chordate vertebrates में भी we are the higher most, ठीक है। So pharyngeal gill slit होगा किन में, होगा lower forms में। Circulatory system closed type with ventrally situated heart and hepatic portal system is there. We are having lymphatic system है, ठीक है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेंट्रल है हमारा हार्ट, ओके। रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी प्रेजेंट होता है कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स में। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन हेम क्या है, ठीक है, हेम दैट इज आयरन, हेम दैट इज आयरन, एंड ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, ठीक है। So it is also present in the blood corpuscles and we know we are having the blood corpuscles, क्या क्या है हमारे पास है, RBC है, WBC है, we are having also platelets, ठीक है। So we are blood is having all this, और blood में और एक क्या होता है, pigments, तो these corpuscles are there, apart from that there is also plasma, ठीक है। So plasma है, RBC है, WBC है, platelets है, we are having excretory system, और जिसके लिए देर इज अ पेयर ऑफ किडनी विच एक्ट एज अ सिस्टम फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ओके। एंड दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं यूनिसेक्सुअल एंड लैक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यूनिसेक्सुअल दैट मीन्स there are separate male and the female individual of the vertebrates, okay, and asexual reproduction is not found here, they lack asexual reproduction. So definitely there will be sexual reproduction taking place in all the tetrapods. अगर vertebrate का आप tetrapoda में जाओगे, okay, so mostly this thing we have seen, and even fishes also. Now subphylum vertebrata, ठीक है, vertebrates is divided into two main division, okay, agnatha which are lacking jaw, jawless होते हैं, jawless vertebrates है, okay, and nathostomata they are jawed vertebrate, simply we can call nathostomata क्या है, jawed vertebrates है। Further it is subdivided into two main superclass, Pisces and Tetrapoda, और Pisces में हमने we have seen there is a two classes, Chondrichthyes, Osteichthyes. So these are two superclass, मतलब Pisces and Tetrapoda are the two superclass, और इस superclass में अगर total आप classes count करोगे, so there are having 6 main classes, okay.
we'll see the classification, separate classification of the subphylum Vertebrata. The subphylum Vertebrata can be divided into two divisions. Okay, that is Agnatha, which lack jaw. There is no jaw present in these organisms. And Gnathostomata, they bear jaw. Okay, so if we come only to Agnatha, Agnatha division में अगर आप आते हो, so there is a class that is Cyclostomata. That is Cyclostomata, and the another one is Ostracodermi. ये Ostracodermi class जो है वो extinct class है. ठीक है? So we are not going to deal with it, but just remember the name. Ostracodermi belongs to this Agnatha. तो ज्यादातर क्लासिफिकेशन जब आप देखते हो तो देयर इज मेंशन नहीं किया जाता Ostracodermi as it is extinct. Now finally we'll come to Gnathostomata, superclass Pisces and Tetrapoda. Pisces bear fin. ठीक है? Pisces का क्या कैरेक्टर है? They will bear fins. And इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस है Chondrichthyes, Osteichthyes. तो ये कार्टिलिजिनस फिशेस है. ठीक है? कार्टिलिजिनस फिश है. Okay, and this will be bony fishes. ठीक है? और जितने भी टेट्रापोडा होते हैं, they bear limbs. Limbs होता है उनके पास. Either 4 limbs and hind limbs को together count करो, so it is 4. So that is Amphibia class over here. Reptilia, Aves, then mammal. Aves हो गया bird का. That is the bird, and Mammalia, the mammals. Okay. Now, let's come to class Cyclostomata, which belongs to Agnatha. Okay, जो Agnatha division से belong करता है. So, class Cyclostomata include lamprey and hagfish. ठीक है, lamprey and hagfish belong to Cyclostomata. They are the most primitive vertebrate, क्योंकि ये vertebrata phylum, we have seen subphylum vertebrate में ही belong करते हैं. Agnatha and Gnathostomata. So they belong to this vertebrata, but they are the most primitive one. They have the following characteristic. Body form कैसा होता है? The body form is long, eel-like. ठीक है? Eel-like body form is there. Appendages कैसे होते हैं? There are no paired fin. जो fins होते हैं, that is not paired. As you can see, this is the, ठीक है? This is the eye region, trunk जो body, the main body. ठीक है? Then dorsal fin है dorsal में, but आप देख सकते हो the lower part there is no, so it is not paired form. Then caudal fin, that is a tail fin. ठीक है? tail के पास जो fin है, that is caudal fin. External gill slit, it is visible from externally also. ठीक है? external आप देख सकते हो, it is visible. External gill slit है, and buccal funnel is there. funnel like mouth structure है. Cyclostomata इसी से इसका नाम है. ठीक है? So median fin supported by cartilaginous fin ray. ठीक है? जो median fin होंगे, middle में जो fins है, किससे supported है? Cartilaginous fins ray, and that fin ray is present. ठीक है? Petromyzine, lamprey, hagfish, ये सारे belong करते हैं इसी cyclostomata से. Digestive system कैसा होता है? ठीक है? hagfish का digestive system कैसे होता है? So the mouth is jawless. ठीक है? वी कैन सी जॉज जो है, जॉ पार्ट वो विजिबल नहीं है. ठीक है? माउथ रीजन है, बट द जॉ इज नॉट देयर. सर्कुलर एंड सक्टोरियल टाइप ऑफ माउथ. ठीक है? सकिंग और स्ट्रक्चर है, लाइक इट विल स्ट्रक टू द ऑर्गेनिज्म. ठीक है? सो सर्कुलर एंड सक्टोरियल जॉलेस माउथ इज प्रेजेंट. टंग बियर हॉर्नी टीथ. ठीक है? एंड द टंग बियर्स हॉर्नी टीथ. Caudal fin again there. This is a trunk region. Vestigial eye. Opening of slime gland is visible. ठीक है? Single external gill slit है, and sensory tentacles है. ठीक है? Now stomach is absent. Endoskeleton कैसा है? Skeletons are present, but how? The endoskeleton is cartilaginous. ठीक है? क्योंकि we have seen cartilaginous fin rays होता है. And notochord persists throughout the life. Notochord throughout the life है. Since they are the most primitive vertebrate, so they are having, इनके ये भी vertebrate है, लेकिन primitive है ना, तो इनका notochord present है throughout the life. और अगर आप देखोगे advanced vertebrate में, तो notochord किस में बदल जाता है? There is, we can say, our nervous system, vertebral column में बदल जाता है.
नाउ नेचुरल हिस्ट्री अबाउट द साइक्लोस्टोमाटा. व्हाट इज द हिस्ट्री? ठीक है, द साइक्लोस्टोमाटा दे आर एक्वाटिक है, मेरीन है, ओके, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. एंड मेरीन फॉर्म माइग्रेट, जो मेरीन फॉर्म होते हैं दे माइग्रेट टू रिवर फॉर व्हाट? फॉर ब्रीडिंग. ठीक है, एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग, सो द प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन जो इनके लिए है वो रिवर का वाटर है. सो दे माइग्रेट फ्रॉम मेरीन ओशन एंड सी से माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? रिवर की तरफ. व्हाई? फॉर ब्रीडिंग. दे मे बी पैरासिटिक और स्कैवेंजर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, आफ्टर स्पॉनिंग, दैट मीन्स आफ्टर लेइंग द एग, ठीक है, विद इन द फ्यू डेज दे डाई. एंड देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, वही एग, ठीक है, आफ्टर लेइंग एग, ठीक है, जो लार्वल फॉर्म आप देखोगे, एग से जो लार्वा में चेंजेस हुआ, मेटामॉर्फोसिस हुआ, सो दे विल रिटर्न अगेन टू द लार्वा. ठीक है, लार्वल स्टेज में जब वो पहुंच गया, अगेन दे विल रिटर्न टू द ओशन. द आफ्टर स्पॉनिंग मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है, आफ्टर लेइंग द एग दे विल डाई. बट जो ऑर्गेनिजम्स जो एग प्रोड्यूस हुए, एग से लार्वा फॉर्म हुआ, ठीक है, लार्वा विल डेवलप एंड दे विल मूव टू द ओशन. अगेन ड्यूरिंग द ब्रीडिंग टाइम दे विल कम बैक टू द रिवर. ठीक है, फिर आफ्टर स्पॉनिंग द न्यू जो यंग वंस था, अब जब वो ब्रीडिंग के कैपेबल होगा तो वो रिवर की तरफ आएगा. फाइनली आफ्टर स्पॉनिंग, so they will again die. Okay, ये साइक्लोस्टोमाटा के कैरेक्टर्स है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है? गोनाड इज सिंगल एंड विदाउट गोनोडक्ट. कोई गोनाड को पास होने के लिए देयर इज नो गोनोडक्ट. गैमेट्स आर शेड इनटू द सीलोम. ठीक है, सीलोम में गैमेट्स शेड हो जाता है. ठीक है, एंड व्हेंस दिस एस्केप थ्रू द यूरिनोजेनिटल एपर्चर. ठीक है, through the urinogenital aperture that gamete will be passed on. फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड फिल्टर फीडिंग लार्वा. ठीक है, फिल्टर फीडिंग लार्वा है, एमनियोसीड्स है. इट इज ग्रेटली रिजेंबलिंग टू द लैंसलेट्स इन द स्ट्रक्चर एंड द मोड ऑफ लाइफ. लैंसलेट से बहुत सिमिलर है साइक्लोस्टोमाटा. नाउ respiratory system include how much? Near about 6 to 15 pairs of gill slits placed in the sac-like pouches. Circulatory system कैसा है? Heart, two chambered heart है. ठीक है, heart कैसा है? Cyclostomata का two chamber है and having one auricle and the one ventricle. ठीक है, like we are having four chamber heart, two auricle, two ventricle. But since ये थोड़े lower forms है, vertebrate में भी lower है, so they are having just two chambered heart. उसमें से भी आप देख सकते हो वन ऑरिकल है, वन वेंट्रिकल है. एंड द रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, एंड सर्कुलर इरेगुलर न्यूक्लिएटेड. रेड ब्लड सेल्स है, सर्कुलर है, इरेगुलर शेप का है. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो न्यूक्लिएटेड. ओके, नाउ द क्रेनियल नर्व्स कैसा है? व्हाट अबाउट द क्रेनियल नर्व्स? सो देयर आर 8 to 10 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स. सेंस ऑर्गन्स में आप देखोगे ऑल्फैक्टरी सैक इज सिंगल एंड मीडियन. ऑल्फैक्टरी सैक भी प्रेजेंट होता है फॉर द टेस्ट. ठीक है, एंड द ईयर कंसिस्ट ऑफ ओनली द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ. लैबिरिंथ रीजन होता है ईयर के पास, ईच विथ 1 to 2 सेमी सर्कुलर डक्ट. एंड लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है टू नोट वेव्स एंड करंट इन दी वाटर. लैटरल लाइन्स होता है ताकि वाटर में करंट को दे कैन डिटेक्ट. एन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी है, मेसोनेफ्रिक है. एंड एग्जांपल्स क्या क्या है? पेट्रोमाइजीन विच इज आल्सो नोन एज लैम्प्रे एंड मिक्जीन दैट इज हैकफिश. मिक्जीन, पेट्रोमाइजीन ये कॉमन एग्जांपल है साइक्लोस्टोमाटा का. ठीक है, यू कैन सी हियर द फ्यू पार्ट्स आर जस्ट एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. ठीक है, प्रिमिटिव गट रीजन जो है वो प्रिमिटिव है. क्रेनियल पार्ट इज देयर. ठीक है, क्रेनियल पार्ट है. देन द मिडल पार्ट एंड कॉर्डल रीजन है. इस नोटोकॉर्ड का कॉर्डल पार्ट भी है. ओके, दिस इज द एम्ब्रियोनिक स्टेज. ओके, एंड देयर इज नेफ्रिक डक्ट इज आल्सो प्रेजेंट. ये सेगमेंटेशन है. ठीक है, नोटोकॉर्ड का. नोटोकॉर्ड एज वी आर सीइंग, नोटोकॉर्ड बाद में हायर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम में बदलता है. ठीक है, नाउ we'll proceed to class Chondrichthyes, which belongs to Gnathostomata.
These are cartilaginous fishes. Okay, they are cartilaginous fish. The most important characteristic feature of cartilaginous fish is that they are having the cartilage. Bones के जगह उनके body में क्या होता है? Cartilage होता है. So the class Chondrichthyes, Chondrichthyes मतलब ही होता है cartilage, and ichthys means fishes. That means they are the cartilaginous fishes and have over 600 species including shark, rays. ठीक है, रेज, स्केट्स, ये सारे बिलोंग करते हैं इसी कॉन्डिक्टस से. मींस इनके पास रेज, ठीक है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द फिशेस है. रेज हो गया, स्केट्स हो गया, शार्क हो गया, इन सब के बॉडी में क्या होता है? कार्टिलेज होता है. दे आर कार्टिलेजिनस फिशेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. एंड दे आर मोस्टली मैराइन. एज वी नो, शार्क कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैरीन वाटर बॉडीज में. सो दे आर मैराइन एंड कोल्ड ब्लडेड. ओके, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है फिशेस. ठीक है, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड द अनदर टर्म दैट इज गिवन फॉर द कोल्ड ब्लडेड इज पोइकिलोथर्मल. ठीक है, पोइकिलोथर्मस एनिमल. दैट मीन्स दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. दे हैव the capacity to regulate their body temperature according to the environmental condition. We are warm blooded, we cannot make the changes in our body temperature. ठीक है, but they are cold blooded. इनका body temperature according to the environmental condition they can just alter. ठीक है, their body is laterally compressed and spindle shaped body होता है. ठीक है, so they are having spindle shaped body. ठीक है, स्पिंडल शेप होता है एंड इट इज कंप्रेस्ड फॉर्म, कंप्रेस्ड बॉडी होता है. नाउ नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट. अगेन नोटोकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ इट विल बी प्रेजेंट. माउथ वेंट्रल है, माउथ जो है लोअर साइड में है. ठीक है, माउथ ओवर हियर. सो माउथ इज वेंट्रल. स्किन जो होता है कार्टिलेजिनस फिशेस का, इट इज टफ. माउथ वेंट्रल containing minute placoid scales. Yes, scales. As we know, fishes, they are having scales. But कैसा scales होता है Chondrichthyes में? Placoid scales. ठीक है. So you can see, Scolidan में भी आप देखोगे, there is dorsal fin. ठीक है. Here pelvic fin. Now median ventral fin is there. Dorsal fin है इधर. Lateral line here from the middle. लैटरल लाइन दिख रहा है. कॉर्डल फिन है. माउथ, ठीक है, पेक्टोरल फिन. ठीक है. नाउ गिल्स क्लेफ्ट आर आल्सो प्रेजेंट. सो दे हैव स्ट्रॉन्ग जॉ. जो जॉ रीजन होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड predaceous by nature. They feed on the other smaller fishes. They are predaceous. Now gill slits are generally five पेयर में होते हैं. As you can see, यहाँ पे भी विजिबल है, 5 पेयर्स में है गिल स्लिट्स. एंड गिल कवर दैट इज ऑपरक्यूलम. जैसे आप नॉर्मल रोहू फिशेस में देखोगे तो ऑपरक्यूलम नहीं प्रेजेंट होता, इट इज एब्सेंट. हार्ट अगेन 2 चैम्बर. फिशेस में 2 चैम्बर ही होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. और आरबीसी आर ओवल एंड न्यूक्लिएटेड. इनका आरबीसी कैसा होता है? ओवल शेप आरबीसी एंड न्यूक्लिएटेड. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. एयर ब्लैडर इज एब्सेंट. कोई एयर ब्लैडर नहीं होता है. एंड so they swim constantly to avoid sinking. They have to swim. Why? Because there is no air bladder. ठीक है, एयर ब्लैडर नहीं है जिससे वो सिंक ना करे. So they have to swim. Okay. Some of them possess electric organ. Yes, Chondrichthyes fishes में ही अगर आप देखो, ठीक है, Chondrichthyes में इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इसका टॉर्पेडो. ठीक है, टॉर्पेडो भी एक Chondrichthyes है, कार्टिलेजिनस फिश है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है. एंड सम पोजेस पॉइजनस स्टिंग्स लाइक ट्राइगॉन. दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल. क्यों यूरियोटेलिक बोला जाता है Chondrichthyes को? बिकॉज दे सिक्रीट यूरिया एज एक्सक्रीटरी वेस्ट. ठीक है, दे सिक्रीट यूरिया. नाउ सेक्सेस आर सेपरेट. दैट मीन्स मेल एंड द फीमेल Chondrichthyes they are separate and the fertilization is internal. Now, male usually has clasper on the pelvic fin. Pelvic fin है, ठीक है. The pelvic region there is a fin present which is known. वहां पे क्या होता है? Clasper region is present which help in copulation. Okay. Now the caudal fin.
जितने भी कॉन्ड्रिक्टस होते हैं उनका कॉर्डल फिन मोस्टली हेट्रोसेरल होता है. हाउ? द कॉर्डल फिन यू कैन सी मीन्स जो टेल का फिन होता है वो इक्वली डिवाइडेड, मीन्स यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू इक्वल हाफ. सो सिंपली वी कैन से इट इज हेट्रोसेरल. The most common example are Squalidon, shark. Normally अब डॉगफिश बोलोगे इसको. टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे. ठीक है. प्रेस्टस, सॉ फिश. मीन्स उनका जो स्नाउट रीजन है, माउथ पार्ट एंड स्नाउट रीजन वाला पास देखोगे किसके जैसा होगा? सॉ के जैसा. दैट इज प्रेस्टस. ट्राइगन, स्टिंग रे. ओके. सो दिस इज द पेल्विक फिन. यहाँ पे क्लास्पर प्रेजेंट होता है फॉर विच इज हेल्पफुल इन copulation, which is visible in male Chondrichthyes. Now we'll see class Osteichthyes. Okay, Chondrichthyes, they were the cartilaginous fish. So Osteichthyes क्या है? Bony fish है. The class Osteichthyes, here we can see the osteon word जो है, osteon का मतलब ही होता है bone, ichthys मतलब होता है fish. Ichthys means fish. So includes all the member of lungfish. ठीक है. The ray finned, ठीक है, ray finned and low finned fish. Okay. So the characteristic features क्या है? This is you can see. Okay, ये bony fish है. Lateral line इनमें भी visible है. Okay. Operculum, gills जो है वो covered up किससे है? Operculum से. Pectoral region पे there is pectoral fin. Okay. Dorsal fin is there. Okay. Dorsal fin, pectoral fin, and this is pelvic. Pelvic region पे है, ये pelvic fin है. Anal fin and caudal fin. So there are the fins present. और यहाँ पे आपने देखा कि there is ray finned. जो fins है इनमें rays like structures are there. ठीक है, rays के जैसा structure है. Okay, so they are found in marine water. Okay, as well as in the fresh water. Marine, fresh दोनों water में मिलते हैं. The body is streamlined. Fishes का जब भी नाम आए streamlined body. ठीक है. Why the body is streamlined? To facilitate the movement in the water. ठीक है, ताकि water में जब वो move करे, water current does not restrict them to move. Okay, so streamlined to facilitate easy movement throughout the water. Exoskeleton contain dermal scale. Exoskeleton भी है. तो exoskeleton कौन सा है यहाँ पे? Scales. All the scales which are present in the fishes, ठीक है, on their body surface वो exoskeleton है. ठीक है. Like cycloid और tenoid scale, दो तरह के scales होते हैं. Chondrichthyes में हमने क्या पढ़ा था? कैसा scale? Placoid scales. And in the Osteichthyes, bony fish में cycloid और tenoids, दो तरह के scales होते हैं. Okay. Now gills are covered with operculum. Yes, it is very correct. Gill cover है and generally 4 pairs में होते हैं. Now heart 2 chambered. Fishes का heart तो 2 chamber ही होगा. 1 auricle and 1 ventricle. Air bladder is present in the bony fishes but not in the cartilaginous fish. So they are hydrostatic organ. तो यहाँ पे जो air bladder है as a hydrostatic organ, it is working. Okay. So fins are paired. Generally fins paired भी हो सकते हैं इनमें, unpaired भी हो सकते हैं, which are supported by fin ray. The most important thing यहाँ पे fin rays भी है. Now tail fin is always homoceral. Here you can see in this diagram, homo that means both. जो आपका tail fin है, fishes का जो tail fin होगा, both will be bilateral अगर दिख रहा हो तो that is homoceral. And if it is not equally, ठीक है, it is not bilateral जैसा structure नहीं दिखे, so that is heteroceral. And kidney कैसा होगा? Mesonephric and they are ammonotelic. ठीक है. Chondrichthyes ureotelic है, means their excretory waste is urea and here ammonia. ठीक है. So they are ammonotelic animal as they excrete ammonia. Fishes क्या excrete करते? Osteichthyes. ठीक है. They excrete ammonia as a waste product. Now separate sexes. Yes, male females are separate. Fertilization is external, mostly viviparous. ठीक है. Oviparous नहीं हो गए, they are viviparous and development is direct. Direct development होता है, कोई लार्वा नहीं होता है. Example क्या है? लेबियो रोहिता, that is रोहू, मृगाला. ठीक है. These are the fishes name. Bony fish है. Catla, hippocampus, that is seahorse, is also belonging to this bony fish. Exocetus, जिसका common name क्या है? Flying fish.
Okay, anabus, climbing perch. Okay, Proteopterus, African lungfish. These all are bony fishes. Okay, I hope Chondrichthyes और Osteichthyes में आप differentiate कर सकते हो. Now we will see class Amphibia. Okay, class Amphibia. What does the term amphi means? Amphi means what? Both. That means they can live on land and in water also. Okay. So class Amphibia, amphi means both, double life. दो तरह से वो अपना life spend कर सकते हैं. And the Amphibia class includes about 6,771 species near about present होते हैं. These animals are frogs, also belong. Frog क्या है? They belongs to Amphibia. Very well, बहुत commonly हमें पता है कि frogs Amphibia है. Toads, salamander and Sicilians. So all these are amphibians. ठीक है? They are the first cold-blooded vertebrates. As we are studying about, already we have seen na Vertebrata में those there was super class Pisces and Tetrapoda. Tetrapoda में Amphibia है. ठीक है? So first cold-blooded vertebrates. They are first cold-blooded vertebrates which venture to live on land from water. Already fishes में भी हमने देखा Pisces, they are also cold-blooded. पर land में रहने वाले पहले cold-blooded organism, ठीक है? So they can venture their life on land from water. ठीक है? Fishes से evolve होके amphibia आया तो मतलब water से land तक organism, now they are the first. The characteristic feature of amphibia is what? They are found in the fresh water. Fresh water में भी है and also in the moist land. Moist soil में भी आप देख सकते हो. So the body is compressed. Body कैसा होता है amphibian का? Generally compressed, cylindrical and differentiated into head and trunk. ठीक है? Okay, cylindrical है head और trunk region, जो body region है उसमें आप differentiate कर सकते हो. तो differentiation है head and trunk के बीच में. Okay. Now nostrils present है and connected to the buccal cavity. जो nostril है, nose का opening जो होगा, you can see this frog. ठीक है? nose का जो opening होगा, it is connected to the buccal cavity. और eyes के ऊपर क्या है? eyelid. This is eye. eye के ऊपर एक layer है. ठीक है? That is known as eyelid to protect the eye. And skin is mostly smooth, moist. गीला skin होता है, moist skin होता है. And highly vascular and rich in glands. There are several glands on the body surface for the secretion. ठीक है? Scales are generally absent. Fishes में हमने देखा scales था. Chondrichthyes में placoid scale था. Osteichthyes में tinoid and cycloid scale था. ठीक है? But here amphibians में आप देखोगे scales present नहीं है. And it helps in cutaneous respiration. That means skin के through, moist skin के through भी respiration होता है. ठीक है? So scales absent है. So cutaneous respiration takes place. Amphibian mostly has two pairs of pentaductile limbs. ठीक है? Two pair मतलब pair में है hind limb, fore limb. ठीक है? अपर जो ऊपर fore limb है वो भी pair में है, दोनों साइड में है. Pentaductile, that means 5, total 5 fingers होंगे. ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो as we are having pentaductile 5 fingers है, तो इस तरह से आप इनमें भी division देखोगे. And it is that limbs, pentaductile limbs that helps in locomotion. Okay. Now skeletons कैसे होंगे? Frog. ठीक है? Frog as they are vertebrates, bony. Skeleton कैसा है? Bony. Notochord does not persist. ठीक है? Higher vertebrates में क्या होता है? Notochord does not persist whole life. It will change to vertebral column. Skull is dicondylic. That means it has two occipital condyles. Most vertebrae are procellus. Digestive system कैसा है? Well developed है. ठीक है? Mouth large होता है, armed with teeth in the upper and the lower jaw. Yes, teeth दोनों jaws में present है. Then vomerine teeth are also found in the frogs and amphibians. And amphibians are the first, ठीक है, vertebrate in which true tongue is found. Tongue जो सबसे पहली बार appear हो रहे हैं वो amphibians में. ठीक है? The true tongue contain the muscles like, okay, a muscles like structure and it is prostribal. Means the tongue, as we know, frogs का tongue extend भी हो सकता है. ठीक है? Alimentary canal leads to cloaca. Alimentary canal, ठीक है,
ends at cloaca. The anal part जो है that is cloaca. उसको particular name है that is cloaca. Okay. Now respiration occurs fish like amphibia. Fishes के जैसा उनके पास गिल्स होता है, ठीक है. तो फिशेस के जैसा वो गिल्स से भी ब्रीथ कर सकते हैं. स्किन के थ्रू केटिनियस रेस्पिरेशन होता है, ठीक है. रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स ऑल्सो एंड लाइनिंग ऑफ बक्कोफायरेंजियल कैविटी. फायरिंग्स रीजन पे क्या होता है, बक्कोफायरेंजियल कैविटी एंड द स्किन के थ्रू भी वो ब्रीथ कर रेस्पिरेशन करते हैं, आइदर सेपरेटली और इन कॉम्बिनेशन. Gills are always present in the larva, like tadpole larva. ठीक है, that may or may not persist in the adult. Tadpole larva, if you remember, in tadpole larva, the gills are present in the larval stage, but adult form में there is no gills. Heart कैसा है? 3 chambered. अभी तक fishes में हमने देखा 2 chambered heart, but here 3 chambered with 2 auricle. Auricle 2 होगा और ventricle 1. Aortic arches occurs in the 3 pairs. RBC इसका भी oval है, but it is biconvex and nucleated. Kidney mesonephric. Amphibians are mostly ureotelic. जैसे आपने देखा Chondrichthyes ureotelic होते हैं, वैसे they are also ureotelic. ठीक है, but Osteichthyes they are ammonotelic. Means ammonia उनका waste होता है. So respiration occur by gills. Okay, so amphibians में respiration कैसे होता है? By the help of gills, and there are another organs like the linings of the buccopharyngeal cavity. ठीक है, linings of buccopharyngeal cavity, gills, lungs. So these are the various organs which helps in respiration. Okay, so when they are in water, generally tadpole. Okay, tadpole they have gills. Okay, then frog they have lungs. Even the lining of the buccopharyngeal cavity, they help in the respiration. Skin, moist skin. Okay, moist skin help in the respiration. Okay, either separately or in combination. Means these organs separately they'll help, or the 2 organs will be involved. So gills are present in the larvae. Larval stage में gills होता है amphibians में. They may or may not persist in the adult stage, like the frog. They don't have the gills, but the tadpole they have gills. Okay. Heart कैसा होता है? Amphibians का heart कैसा होता है? So they have 3 chambered heart. ठीक है, heart कैसा है? 3 chamber का है, with 2 auricle and 1 ventricle. Okay, 2 auricle है, 1 ventricle है. Okay, so we can see like this. ठीक है, 2 auricle है. Okay, this is right auricle, left auricle, and this is ventricle. So heart is 3 chambered. 3 chambered heart है, 2 auricle, 1 ventricle. Aortic arches occur in pairs. RBC कैसा है? Oval shape का है. Biconvex भी है and nucleated. Nucleus is present in their RBC. ठीक है, so their RBC is mostly inactive. Okay, so kidney कैसा है? Mesonephric. Mesonephric kidney and amphibian are mostly ureotelic. Ureotelic, that means they release urea as the waste product. The waste product is urea. Okay. Now, a pair of external nares for olfaction. ठीक है. External nares are present, means like we are having nostril, so they have nares for olfaction, that means for smell. Okay, pair of eyes are there with movable eyelids. Eyelids are movable, okay, which is very clearly seen in frogs. ठीक है, so eyelid है, movable है. Tymphanum is there, which represent their ear. Tymphanum. Larvae and adult aquatic amphibians, ठीक है, they shows lateral line sensory system. Sensory system is there, and you can see there is a lateral line system. Okay, larval में भी होता है और ज्यादातर aquatic में, aquatic amphibians. So this is the diagram of, ठीक है, किस चीज का इमेज है? tadpole, which is having gills. यहाँ पे gills है. Okay, so इनमें metamorphosis होगा and then finally they will be converted to frogs. Okay, fertilization कैसा होता है? Usually external. Okay, mostly it is external fertilization, but sometimes
we can see internal fertilization also, like in salamander. Okay. So development is indirect. Indirect development hai, larval stage is called tadpole. Indirect development hai, why? Because there is a larval stage also, and that larva is known as tadpole. Now, they are again amphibians. Amphibians, they are oviparous. Okay, oviparous, that means they are egg laying. Okay, they are egg laying organism. Adult female lay eggs and the embryo develop inside the egg. And finally, when the egg is hatched, the organism, the frogs, okay, tadpole, they get released. So adult female lay eggs and the embryo develop inside the egg. So they are oviparous. Okay. Amphibian undergo hibernation. Yes. Hibernation is a long winter sleep. Okay. And what is aestivation? It is a summer sleep. Okay. So amphibian undergo hibernation also. In which season? Winter season. And aestivation in the summer. Aestivation, when does it take place? In the summer season, to avoid extreme temperature. Okay. To avoid the extreme temperature, when it is too cold, so they go for a deep sleep. In that duration, they are mostly inactive. Okay, inactive ho jate hai. They collect their foods and all and then go for a sleep. So that is hibernation. Okay, so this is all to adjust themselves, yeah, avoid the extreme temperature. What are the examples of amphibian? Rana, that is a frog. Bufo, that is known as toad. Hyla, क्या है? Tree frog है. And salamander. These are the common examples of the amphibians. Okay. Now, we'll come to the next class, that is Reptilia. The class Reptilia. Okay. So, what does the name suggest? Class Reptilia, that means they creep. Okay. Reptilia, they are the organism that creeps on the ground. Okay. They include 9,500 species, okay, of animals like lizard, turtle, snake, crocodile, tortoise, all comes under this class. Okay. Now, reptiles are the first fully adapted terrestrial animal. Amphibians are adapted to the terrestrial land, but they are not fully adapted because they are amphibians. They live on both land and in water. Okay, दोनों state में रहते हैं, land पे भी water में. But the reptiles, they are the first. They are fully adapted to live on the land. What are the characteristic features of the reptiles? They are terrestrial. Okay. Terrestrial है. Few of them live in water, such as tortoise and crocodile. Okay, tortoise, crocodile, they live in water. The body may be long. Okay, these are the images of the various reptiles. Okay, so the body may be long भी हो सकता है, cylindrical भी हो सकता है, long, cylindrical, short, and even broad. It is divisible. So the organism, reptiles, their body can be differentiated into head part alag hota hai, then the trunk, and the last part, that is the tail. So head, neck, trunk, tail. So neck is also the most distinguishing feature. यहाँ पे आप differentiate कर सकते हो. You can even just point out this neck part also. Head के बाद neck है, then trunk, and then the tail. Okay. So ये body जो है fully divisible into this 4 parts. They have a dry, tough, or we can say it is rough and non-glandular skin. Dry and rough. Okay. And it is provided with horny epidermal scales are also there. Okay. Epidermal scales. Skin के ऊपर जो outermost layer है, the epidermis, they have scales or also scutes. Scales को, epidermal scales को आप scutes भी बोल सकते हैं. So it is also present. So generally we have seen in crocodile, snake also, they have scales. Okay. Now appendages are of 2 pairs. Okay. Appendages of reptiles are in 2 pairs and pentadactyl limbs is present with powerful horny claws. Claws are there. It is very powerful and horny to have a clutch. Okay. So limbs are locomotory organ in the
reptiles. Now, endoskeletons are present, but it is bony. So, bony endoskeletons is present and the skull is monocondylic for articulation with the vertebral column. So, this is the skull and it is, there is a presence of monocondylic articulation. So, you can see here, okay, one occipital condyle is there. Why? So that wide range of movement is allowed. Okay, wide range of movement possible here because of this monocondylic articulation. Okay, so there vertebral column get fits. Now, digestive system is also well developed in reptiles. The mouth is large with acrodont teeth in both the type of both the jaws. Means teeth are not of equal shape and size, and jaw bones are movable. The jaws are movable to swallow the large prey. Yes. Now, the lungs are also here. They are having lungs. Reptiles have the lungs. They are the respiratory organ. Ribs of reptiles helps them to expand and contract the body cavity. So, it is all because of the ribs that the expansion and the contraction of the body cavity is possible, making the lungs more efficient. Okay. So, heart kaisa hai? Heart is usually three-chambered. So, three-chambered heart is present in reptiles with two auricle and one ventricle. Okay. So, two auricle, you can see here, two auricle will be there, right auricle, right ventricle. Okay, right auricle and this is left auricle and there will be only one ventricle. Now, here you can see the ventricle is one and it is incompletely divided by the septum. Okay, the heart is four-chambered. Four-chambered heart is also present in one of the reptile, that is crocodile. Okay, so crocodile has four-chambered heart. It is the exceptional case. And RBC are oval, biconvex, and again nucleated RBC is present in the reptiles. Here we can see the three-chambered heart, which most of the reptiles they have apart from that crocodile. So finally what happened, as you can see this diagram, okay, so the blood, impure blood enter right auricle. Impure blood kaise enter karta hai? It enters through right auricle and then it will enter the ventricle part. The ventricle do not have septum. So ventricle se aage kahan jana hai impure blood ko? It will finally go to lungs for purification. So, from right auricle to right, simply ventricle it will go. Okay. And it will be sent to ventricle kahan bhejega blood ko for the oxygenation. It will be sent to the lung. And there the oxygenation will take place, exchange of gases hoga. Okay. And then finally the pure blood will reach the left auricle and then finally ventricle. Okay. And from ventricle again it will be circulated in the whole body. So, in this way the heart is three-chambered. The septum is very incompletely formed in the ventricle region and crocodile has four-chambered heart. Now, excretion occur through metanephric kidney. So, kidney is the main organ which is working as an excretory system. Okay, so now the terrestrial forms releases, जितने भी terrestrial reptiles है, they release the waste product in the form of uric acid. While the aquatic reptiles, they forms excreta as urea. So aquatic reptile, they have urea as their excretory product and all the terrestrial reptiles, they have uric acid. Okay, now crocodile is ammonotelic. So crocodile का जो waste है, that is ammonia. Now, nervous system contain 12 pairs of cranial nerves and the sense organs, eyes, ears, nose. Okay, so these are well developed. Now, we'll come to the next point, reptiles. The examples, common examples of the reptiles. Now, the reptiles are cold-blooded. So, they are the cold-blooded organism, cold-blooded animal. Their body temperature can be balanced. Okay, so they can alter in their temperature. So that is why we can call them as poikilothermal. Okay, according to the environmental condition, environmental temperature,
So they can also modify or alteration can be done in their body temperature. So they hibernate in winter. Yes, hibernation bhi karte hai. Now snakes and lizards shed their scales as skin cast. Snake and lizard also, both they shed their scales. Okay, so they are unisexual and shows sexual dimorphism. That means male and the female reptiles are separate and fertilization is internal. Most reptiles are oviparous. Okay, they are oviparous, egg laying hote hain, and some are ovoviviparous such as viper, sea snake, all these organisms. So oviparous is also there. The egg laying reptiles are also there, and ovoviviparous. That means egg ke through the organisms are also hatched. Now we'll see the common examples of reptilia. Kelon, that is turtle. Chameleon, calots, that is a garden lizard. Okay, Naja, that is cobra. Okay, then all these are bangaras, vipers. These are the reptiles, different varieties of the snakes, which are the common examples of the class Reptilia. Now we are coming to the next class, that is class Aves. Okay, so what does the Aves word represent? Class Ave includes all the birds. Okay, so they are the flying vertebrates. Okay, क्या है ये? Aves, the birds, they are the vertebrate, but they are flying vertebrates. They include all bipedal feathered animal. Yes, we know very well the birds are feathered animal. They are bipedal. You can see two legs are just there. Okay, two legs होते हैं and the four limbs is converted into the feathers. Okay, now an immense varieties in the birds is found, such as we can come across the large varieties of the birds like parrot, pigeon, crow, all these. Okay, we are very much familiar with these types of birds. The characteristic feature, what are the characteristic features of aves? Now, birds, they have aerial mode of life. That means most of the part of the life they spend in the air. Okay, so they spend most time in air. So the body is usually streamlined body. Okay, again, like the fishes, they are also having the streamlined body, which help them to fly easily in the air without any restriction. And the body is divided into head, then the neck region is there, then the trunk, and the last part, tail. So again, head, neck, trunk, tail is present. The body is differentiated into these four parts. Exoskeleton. Exoskeleton also is there, the light feathers. The feathers of the birds, they can be called as exoskeletons. What is the role of the feather? It acts as an insulator. Okay, it acts as an insulator and helps in flight. As we know very well, the feathers of the birds, they trap the air within it. Okay, and the air is a very good insulator. Okay, so most of them fly except the flightless bird. We are very much familiar with the ostrich, emu. So they are the flightless bird. Okay, so the skin is dry without any gland except the oil gland and praying gland at the base of the tail. Okay, apart from these oil gland, there are no other glands present on their body. Now, endoskeleton. Exoskeleton is the light feather. But what about the endoskeleton? The skeleton is present. It is fully ossified. That means it is bony skeleton. Bones are present in aves. Okay, and it is made up of delicate and light bones. We know the birds, they have light and hollow bones that help them to fly. Okay, so since they are having hollow bones, it makes the body weight very light. So it is easy for them to fly. So long bones are hollow with air cavities. Okay, so that air cavity, we can call it as pneumatic to reduce the weight. Now, what about locomotion? Locomotion, okay, that is movement. How the movement is possible? It occurs through wings because they trap air in the feathers. Okay, so four limbs. The four limbs is modified into wings, and the hind limbs, they are generally helping them to they have the scales and modified for walking, even running, okay, swimming. Okay, and then clasping the tree, the branches of the tree,
clutch करने में help करता है. Okay, so that is digestive system of the bird has additional chamber, one additional chamber that is known as crop and gizzard. Yes, very important characteristic feature of the digestive system of birds is that they have crop and gizzard. Okay, now the crop part, जो digestive system का part है इनका crop, they store and soften the food. So the role of this crop is to store the food and soften it, and gizzard, what does it do? It help in crushing and churning the food. Crush करने का काम gizzard का है, and crop just store and soften the food. So alimentary canal leads into the four-chambered cloaca. Okay, so alimentary canal get open to cloaca. Okay, now the lungs, again the birds, they have lungs for respiration because there is no chance of having gills. Okay, so they have lungs as a respiratory organ that which are very spongy. Okay, which are very spongy, inelastic, and are connected to the large air sac. So they have air sac. Okay, now the pharynx is without voice box. Pharynx part is there, but there is no voice box. Okay, and the voice is produced in some special structure, that is a special organ that is known as syrinx. So you can see the bird. Okay, the trachea, ये trachea part है. Okay, windpipe, and here a special organ is there in the center, that is syrinx. That is from where the voice is being produced. Now you can see that the syrinx, after this syrinx, it has been divided into bronchus, and then finally it will reach the lungs. So it is just similar to the human respiratory system also we have seen. Okay, firstly there is windpipe, and then finally it will enter. Okay, in this way it will enter the lungs, but the special structure here, as you can see in the birds, that syrinx, इस region पे होता है, syrinx. Okay, and after that you can see bronchus region, or bronchus will open into the lungs. Okay, now they have the pharynx is present but without the voice box, and the voice is produced in the special organ syrinx, and which is present at the base of this trachea. ये trachea windpipe है. Okay, so at the base of the trachea is present syrinx. Excretory organ are kidney. Again, here also in birds the kidney is metanephric. Okay, excretory waste material क्या होता है Aves में? Mainly it is uric acid, and urine is semi-solid. The urine part is semi-solid, and excretory waste is uric acid. Now heart. The birds, they have proper four-chambered heart with two auricle. ठीक है, two auricle and two ventricle. Right auricle, left auricle, right ventricle, and left ventricle is present. So they have a proper four-chambered heart. Okay, RBC are oval, biconvex, and nucleated. So as far we have seen, fishes, reptiles all have nucleated RBC. Okay, so birds are the warm-blooded animal. इससे पहले reptiles and amphibian we have seen, they are cold-blooded, but birds are warm-blooded animals, as the body temperature cannot be changed according to the environmental situation. So they are homeothermal. Homeo means same. Thermal means heat. That means the body temperature remains same. Okay, so they maintain the constant body temperature. Okay. Now nervous system, again here 12 pair of the cranial nerves are present. Sexes are separate with sexual dimorphism. Males and the female birds are separate. Left ovary is present in the female while the right one is absent. Okay. Here in the reproductive system we will see the female birds, they have only the left ovary is present but the right ovary is absent. Fertilization internal. Birds are oviparous, egg-laying organism they are. Egg possess 4 extra-embryonic membrane. There is extra-embryonic membrane, the 4 layer. Okay, so that is chorion, amnion, allantosis, and the yolk sac it will be.
SAC. Okay. And development is direct. So here we can see the embryonic, 4 extra embryonic membrane, the amnion part, chorion part is the surrounding one. Okay. And this one is allantosis. Yolk sac is also present. Okay. So 4 extra embryonic membrane is present. Now, cloidic eggs are present and are covered by calcareous cell. So, all the birds mostly we have seen their eggs are covered by calcareous shell. And what about the organism? What are the examples of this? Flying birds में अगर हम देखें तो flying birds, crow, sparrow, these are the scientific name and these are the common name. ठीक है, crow, corvus, the scientific name, genus name it is. Passer is the sparrow. Columba word is for the scientific name, genus is for pigeon. Okay. Pistacula for the parrot. Peacock is also there. So all they have, they belongs to the aves, or we can simply say birds. Flightless birds are also there. Emu, kiwi, ree. Okay. The ostrich, penguin, they are also a flightless bird. The fossil bird, one of the important example of the fossil bird, which is no more here. So that is Archaeopteryx. Okay. Now we'll see class Mammalia. Okay. So class Mammalia includes all the mammals. Okay. So what does the word mamma means? Breast. Includes about 5,499 species over here. So these animals are warm-blooded. Yes, birds were warm-blooded, and here mammals are also warm-blooded. They have hairs on the skin, okay, and have the most important organ, that is a mammary gland. So the presence of the mammary gland proves that they are mammals. So the characteristic features of the mammalia are, they are found in the varieties of the habitat. We can find them in the forest region, grassland, mountain, desert, pond, even water bodies, caves, and some of them have adapted to fly or live in the water also. Okay. Like whale, it is being a mammal, it lives in the water. So the body of the mammals are divided into head, neck, trunk, and tail. Okay. So the presence of the mammary gland is the most characteristic feature of the mammals. Mammal nourish their young one with the help of their milk. Yes. The skin is covered with the sweat gland and sebaceous gland, the 2 glands which are present in the skin region. Exoskeleton can contain feathers, hairs, fur, nail, claws. So these are the, we can see in certain animals, because in this class Mammalia, all the animals are also included apart from humans. Okay. So there are certain like yak and all. So they have hairs, furs on their body. So all are included. Okay. Nails, claws. So these are present in mammals. External ear. The ear is external and that is known as pinna are also present. And they are all these things, the hair, skin, the nails, the claws, they are skin derivatives. That means they arises from the skin region. Okay. Now the endoskeleton. Here, nails all what they were exoskeleton. So externally found hote. But the endoskeleton poses skull and the vertebrae. The vertebrae are connected by intervertebral disc. That means the vertebrae, all the vertebrae, that means total 33 vertebrae the humans are having. Okay. So all the vertebrae are jointed together by the intervertebral discs. Okay. Now 2 pair of pentadactyl limbs. We are having 5 fingers and 5 toes. Okay. Are present and helping in walking, running, climbing, burrowing. Okay. Now, 4 limbs are modified as flipper, like in penguin and whales. You can see whales. Okay, they have flipper. 4 limbs, kisme converted hai? Flipper mein. The digits end with horny nail. Digit, that means fingers and toes. They end with horny nails, claws, or some case hoofs, like cattle and all. Now, what about the dentitions, the teeth habit? So what type of the teeth mammals they have? Heterodont. Mammals can be heterodont. That means the different varieties of the teeth. All the teeth that will be not same in size and shape. So we can simply say different types of teeth. That is
The term is given heterodont. Okay. Now, thecodont. What does the term thecodont means? Theco, that means the teeth are embedded in the jaw. As you can see in this diagram, so the teeth are this, just imagine that this is jaw. Okay. So the teeth are embedded in the jaw. So we can call them as thecodont. Okay. Diphyodont. What does the term diphyodont means? That means the animals or the organism have two set of teeth. One is milk teeth and the other is the permanent teeth, as we the human beings we have. Okay. So we have two sets of teeth. Firstly, the milk teeth is replaced. Milk teeth is present, which is replaced by the permanent teeth. Okay. Now, lungs are spongy and elastic. A sound producing organ is also present. We are able to produce sound, and so sound producing organ, that is known as larynx, is also present in mammals. Heart, what about the heart? Four chambered heart we are having, two auricle, two ventricle. Okay, so we are having right auricle, left auricle, okay, right ventricle and left ventricle. So our auricles and ventricles are divided by septum. Septum है जो हमारे चारों chambers को intermix नहीं होने देता है. Okay, so the impure blood from the right auricle will enter the right ventricle, and then through from the right ventricle it will reach the lungs. Okay, and from the lungs, when the lungs which will oxygenate the blood, it will again send it to left auricle. Lungs से again left auricle में आएगा blood, pure blood. Okay, and then finally it will reach the left ventricle, and from left ventricle to aorta. So in this way, the four chambered heart is working in the mammals. Okay, so RBC कैसा है हमारा mammals का? Oval है. Okay, biconcave है, and it is enucleated. Till now, amphibian, reptiles, bird, we have seen their RBC was nucleated. Nucleus present है उनके RBC में, but we don't have RBC with nucleus. So we are enucleated biconcave RBC. Okay. Now, excretory organ, just simple kidney, and they excrete urea as a waste product. So the mammals have the waste product in the form of urea. Now, brain is very well developed. Brain is very well developed with large convoluted cerebrum, cerebellum. So these are the part of our brain. Okay, cerebrum and cerebellum. Cerebrum is the largest part of the brain, and the small brain, that is known as cerebrum. Okay. Now, 12 pairs of the cranial nerve is present. Sense organs well developed. We are having well developed sense organs. Ear comprises of the three regions, the important region: internal ear, middle ear, external ear. Okay. So external opening, our ear has external opening, that is known as, it is protected by a large fleshy or cartilaginous structure is there, that is known as pinna. Eyes are protected by eyelid. Okay. Of which upper one is movable. The upper eyelid is movable, but the lower eyelid is immovable. Mammals are unisexual and shows prominent sexual dimorphism. Gonads are paired. Okay. The reproductive organs are present in pair. The testes present in males descended into the scrotal sac, and most of them are viviparous. That means they give birth to their young ones. There is not like the case as the bird. First of all, they lay egg. The eggs are hatched and then the cheeks comes out, but it is not in the mammals. Okay, except protherians. Protherians is one of the subclass of the within this mammal. They are oviparous. Okay, that means they lay egg, but rest all, apart from these protherians, rest other are viviparous. Now, fertilization is internal. Embryo development takes place in the uterus. The fetus is connected to the uterine wall through placenta, okay, and get nutrition and respiration. Placenta formation is not found in protherians. Okay, since they they are oviparous, so there is no need of the placenta, okay, where the embryo development take place. Okay,
in detail about all the system. When we'll come to the different separate chapter, reproductive system, respiratory system. So mammals के बारे में जब आप in detail पढ़ोगे, so that system will clear all the much more detail. Okay, so development is direct, larval stage not present. Mammals में कोई larval stage नहीं है. They are amniotic. ठीक है, amniotes and embryo develop from the 4 embryonic layers during the development. Now, parental care. So, it will be parental care. Parental care is highly developed and they feed their young ones with the milk and protect them from the enemies. So, these are important characteristic features of mammals. Okay. So, now we have came to the end of this whole animal kingdom. I hope this chapter is clear to you because we have discussed all the subtopic in phylum wise.